साइकोटिक डिसऑर्डर्स काफ़ी डिसऑर्डर्स की स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं, जिनमें स्किज़ोफ्रेनिया आ जाता है, स्किज़ोटिपिकल डिसऑर्डर आ जाता है, परसिस्टेंट डिल्यूजनल डिसऑर्डर आ जाता है, एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर आ जाता है। सबसे पहले जो मेन आपके एमबीबीएस लेवल के हिसाब से तो आपको मेनली स्किज़ोफ्रेनिया तो पता होना चाहिए, तो स्किज़ोफ्रेनिया से स्टार्ट करते हैं इसको। द वर्ड स्किज़ोफ्रेनिया वॉज कॉइन्ड बाय यूजीन ब्यूलर. It was derived from a Greek word schizo means split and phren means mind. Stigma, discrimination and violation of human rights of people with schizophrenia is common. Introduction. The most common phenomena include thought echo, thought withdrawal, thought insertion, thought broadcasting. Thought echo इससे क्या समझ आता है आपको? Anyone? कोई एक स्पेसिफिक थॉट बार बार आपके मन में गूंजता रहेगा। ये भी हो सकता है कोई एक थॉट ना हो, एक थॉट गया फिर दूसरा आया, बस थॉट्स इको करते हैं। इंसर्शन, ऐसा लग रहा है कि कोई आपके पेशेंट आके बोलेगा कि सर कोई मेरे अंदर विचार भर रहा है और मैं ये विचार सुन पा रहा हूँ। विड्रॉल, कि किसी को मेरे थॉट्स मेरे अपने नहीं है, कहीं बाहर से आ रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मैं जो भी सोचता हूँ टीवी में, अखबार में, हर जगह पता लग रहा है। इन्फ्लुएंस, होता है कि पेशेंट को ऐसा लगेगा कि इसे कोई उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले रहा। डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन और डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, जैसे कि इन्फ्लुएंस का मैंने बताया कि डिल्यूजन ऑफ पेशेंट को, एक होती है आइडिया, एक होता है डिल्यूजन। आइडिया और डिल्यूजन में ये फर्क होता है कि आइडिया में पेशेंट को लगता है उसके साथ ऐसा हो रहा है, डिल्यूजन में पेशेंट को फर्म बिलीफ होती है, फिक्स्ड फॉल्स फर्म बिलीफ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग एविडेंस। हेलुसिनेटिंग वॉइसेस, मोस्टली ऑडिटरी हेलुसिनेशन सबसे ज़्यादा कॉमन होती है स्किज़ोफ्रेनिया में। सेकंड नंबर पे ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस होती हैं। थॉट डिसऑर्डर्स और नेगेटिव सिम्टम्स। Schizophrenic disorders are characterized in the general by the fundamental and characteristic distortions of thinking, perception, and effects that are inappropriate or blunted. Clearly conscious and intellectual capacity are usually maintained, although certain cognitive deficits may evolve in the course of time. It's a schizophrenia treatable. Treatment with medicines and psychosocial support is effective. Schizophrenia is defined by a group of characteristic positive and negative symptoms, deterioration in social, occupational, and interpersonal relationships, continuous signs of disturbance for at least 6 months. Schizophrenia is characterized by distortions in thinking, perception, emotions, language, sense of self, and behavior, common experiences including hearing of voices and delusions. कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके आपको नाम पता होने चाहिए, जो कि सबसे पहले है एमिल क्रेपलिन. The illness dwells, according to him, the illness dwells relatively early in life and its course is likely deteriorating. Chronic deterioration reminded dementia, also known as dementia precox, but was not followed by any organic changes of the brain detectable at the time. Then came Eugene Bleuler in 1911. He renamed Kraplin's dementia precox as schizophrenia. He recognized the cognitive impairment in the illness, which he named as a splitting of the mind. Then that the diagnosis for schizophrenia was having 4A's. It was a diagnosis by 4A symptoms, that is affective blunting, disturbance of association, autism, and ambivalence, that is fragmented emotional response. These groups of symptoms are called the 4A's, and the Bleuler thought they are the primary for the diagnosis. The other known symptoms include hallucinations, delusions, which are appearing in the schizophrenia very often also. He used to call it as secondary symptoms because they could be seen in any other psychotic disorder, which are caused by quite different factors, from intoxication to infection to other disease entities. Then Kurt Schneider, he emphasized the role of psychotic symptoms as hallucinations, delusions, and gave them a privilege of the first rank symptoms, even in the concept of the diagnosis of schizophrenia. Schizophrenia disorder is prevalent in all cultures across the world. About 15% of new admissions in mental hospitals are the schizophrenic patients. And the patients are diagnosed having a 50% of all mental hospital beds. 3 to 4 per thousand is in every community. People suffer from schizophrenia. The peak age of onset is around 15 to 25 for men and 25 to 35 for women. 2/3 of the cases are in the age group of 15 to 30 years. Identify schizophrenia patients. Lifetime prevalence of about 1% in schizophrenia disorder. Early onset of schizophrenia. ये ICD-10 की क्लासिफिकेशन है स्किज़ोफ्रेनिया की.
They mainly schizophrenia F20, F22, 20.0 paranoid schizophrenia. आपके लेवल पे आपको सिर्फ इनके नाम पता चाहिए, इनकी डिटेल्स अभी मैं बताऊंगा आगे, पर इतना आपको डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, क्योंकि वैसे साइकेट्रिस्ट से आपको 1 या 2 क्वेश्चन बाय चांस ही आएंगे एग्जाम में। तो पर आपको बेसिक पता होना चाहिए। स्किज़ोफ्रेनिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स यूजी लेवल पे अगर साइकेट्री में देखा जाए। Etiology. In schizophrenia disorders that have multiple factors, these are discussed below. Biological theories. It includes the biochemical, neurostructural, genetic, prenatal factors and other factors also affect. Number 1, biochemical theories. That is dopamine hypothesis. In this theory, excess amount of dopamine-dependent neuronal activity in the brain causes schizophrenia. The theory states that this excess activity may be related to increased production or release of dopamine at the nerve terminals, increased receptor sensitivity. Pharmacological support for this hypothesis exists, that is amphetamines, which increase the level of dopamine, induce psychomatic symptoms. The neuroleptic drugs like chlorpromazine, haloperidol lower the brain levels of dopamine by blocking dopamine receptors, thus reducing the schizophrenic symptoms, including those induced by amphetamines. Other biochemical hypotheses are various other biochemical hypotheses have been implicated in the predisposition to schizophrenia. Abnormalities in neurotransmitters like norepinephrine, serotonin, acetylcholine, GABA acid, and in neuroregulators and as prostaglandins and endorphins. Neurostructural theory states that in schizophrenia, person research study that the prefrontal cortex, limbic cortex may never fully develop. CT and MRI study shows that decreased brain volume, larger third and lateral ventricles associated with poor premorbid functioning, negative symptoms, poor response to treatment, and cognitive impairment. Atrophy in the frontal lobe, cerebellum, and limbic structures, increased size of the sulci on the surface of the brain. Genetic theories. This disease is more common in people born in the contiguous marriage, that is the within the first cousin. Research studies shows that relatives of schizophrenia have much higher chance than the general population. Identical twins are affected by 50%, fraternal twins are affected by 15%. One parent affected, then there's 15% chance the child may have schizophrenia. Both parents affected, then they have 35% chance. Second degree relatives, chance affected by 2 to 3%. Brother or sister affected, then 10%. Perinatal risk factors. The multiple neogenetic factors influence the development of schizophrenia. Maternal influenza, birth during the late winter or the early morning, complication in pregnancy, especially during labor or delivery. Another study found an association between the viral infections of the central nervous system during childhood and adult onset schizophrenia. Then came the psychodynamic theories. First of all, it included a developmental theory. According to Freud, there is regression to the oral stage of psychosexual development with the use of defense mechanism of denial, projection, and reaction formation. Individuals have poor ego boundaries, fragile ego, inadequate ego development, superego dominance, regressed id behavior, love-hated relationships, and arrested psychosexual development. Family theories. Family theories like family relations act as a major influence for the development of the illness. Mother-child relationship. This theory characterized by the mother of schizophrenics as cold, overprotective, dominating, and so that the ego development of the child. Dysfunctional family system. Hostility between parents can lead to schizophrenic daughter. Double-blind communication. Parents convey 2 or more conflicting and incompatible messages at the same time. Stress model. Studies have been conducted in an effort to determine whether psychotic episodes may be precipitated by stressful life events. Extreme stress can precipitate a psychotic episode. Then Sadok in 2003 states that the stress can be biological environment or both. The environmental component can be either biological or psychological. Even stressful life events can lead to schizophrenia. ये theories हैं कि ऐसे schizophrenia हो सकता है, पर कोई definitive reason नहीं होता। वो जैसे डोपामिन वाली थी, डोपामिन लेवल्स का इफेक्ट आता है, सिम्टम्स का इफेक्ट आता है, वो फिर किस थ्योरी बना दी। जेनेटिक फैक्टर फ्रूट का जैसे फ्रूट था, इसका मोस्टली हमेशा साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पे रहा। इसका भी लेक्चर अलग से होगा जिसमें इसकी 5 स्टेजेस होती हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की।
और जी थ्योरीज हैं ये सिर्फ ये बताते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया से हो सकता है, पर डेफिनेटिव कोई कॉज नहीं। इटोलॉजिकल कॉज मल्टीपल हो सकते हैं। हाँ, जेनेटिक थ्योरी जो बता रही है वो ऐसा है कि अगर एक पेरेंट में है तो 15% चांस होगा कि हो सकता है, अगर दोनों पेरेंट्स में तो 35% चांस होता है। हमारे पास एक पेशेंट आता है, उस फैमिली में दोनों सिस्टर्स को स्किज़ोफ्रेनिया है, 2 सिस्टर्स आती हैं एक साथ, दोनों स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स हैं। Course of schizophrenia. It can be continuous with temporary improvement, or episodic with progressive or stable deficit, episodic with complete or incomplete remission. 99% ऑफ केसेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया जो देखेंगे 90 to 99% उनमें 100% रिमिशन कभी नहीं आता। कुछ सिम्टम्स हमेशा परसिस्ट करते रहते हैं, एक या दो। टिपिकल स्टेजेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया: प्रोड्रोमल फेज, एक्टिव फेज, रेजिडुअल फेज। The first is the prodromal phase. The characteristics of this phase include social withdrawal, impairment in role functioning behavior, that is the peculiar or eccentric, neglect of personal hygiene and grooming, blunted or inappropriate affect, disturbances in communication, bizarre ideas, unusual perceptual experiences, lack of initiative, interest or energy. The length of this phase is highly variable, may last for many years before deteriorating into the schizophrenic state. In the phase characterized by the psychotic symptoms are prominent, from following are the DSM-4 TR findings, diagnostic criteria in 2000 for schizophrenia. Characteristic symptoms: 2 or more of the following each present for a significant portion of time during a 1 month period: delusions, hallucinations, disorganized speech, grossly disorganized or catatonic behavior. Negative symptoms: catatonic behavior होता है कि पेशेंट एक स्पेसिफिक पोजीशन में फिक्स हो जाता है। जैसे आप उसकी आर्म को मूव करोगे, आपने यहाँ छोड़ दिया आर्म को, तो जब तक आप उसे वापस यहाँ नहीं लेके आओगे उसकी आर्म इसी में रहेगी। पेशेंट फूड नहीं इनटेक नहीं लेता, बाथरूम नहीं जाता, तो कैटाटोनिक सीरियस होता है स्किज़ोफ्रेनिया की फॉर्म में। सोशल ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन फॉर सिग्निफिकेंट portion of time since the onset of the disturbance, one or more major areas of functioning such as work, interpersonal relationships or self-care are markedly below the level achieved before. The onset when the onset is childhood or adolescence, the failure to achieve expected level of interpersonal or academic or occupational achievement. Duration: continuous signs of disturbance persist for at least 6 months. This 6-month period must include at least 1 month of continuous symptoms that meet the criteria. Then comes the third phase, the residual phase. Schizophrenia is characterized by the periods of remission and exacerbation. A residual phase usually follows an active phase of the illness. Symptoms during the residual phase are similar to those of the prodromal phase, with flat affect, impairment in role functioning, and being prominent. Residual impairment often increases between the episodes of active psychosis. स्टार्टिंग में आया था ना पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, तो अभी हैं नेगेटिव सिम्टम्स में आता है एलोगेरिया, दैट इज लैक ऑफ स्पीक आउट, अफेक्टिव फ्लैटनिंग, पेशेंट का अफेक्ट बिल्कुल ब्लैंक होगा, कोई रिएक्शन नहीं देगा उसके फेस पे, आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। एवोल्यूशन, एपैथी, एनिडोनिया, अटेंशन इम्पेयरमेंट। पॉजिटिव सिम्टम्स में बेसिकली आ जाती है हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, बिजार बिहेवियर, थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल, सुसाइडल टेंडेंसी। क्लिनिकल पिक्चर: थॉट एंड स्पीच डिसऑर्डर, autistic thinking, removing away from the reality, losing of association, thought blocking, poverty of speech, poverty of idea, echolalia, preservation होता है कि पेशेंट एक कुछ वर्ड्स को ही रिपीट करता जाएगा, एक दो मोनोसिलेबल वर्ड्स होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। delusional disorder, most common delusion in schizophrenia is delusion of persecution and delusion of reference. persecution और reference में क्या फर्क है? Can anyone? परसिक्यूशन से क्या समझ आता है आपको? परसिक्यूशन का डेफिनेशन क्या है वर्ड की? परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? ये सिंपल इंग्लिश वर्ड है यार। परसिक्यूशन में पेशेंट को ये होता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। मोस्ट कॉमनली ये उसके फैमिली मेम्बर्स पे, नेबर्स पे, या जो भी किसी से कोई भी उसके आसपास के लोग हैं उन पे शक होता है कि ये मुझे मारना चाहते हैं, मेरे घर वाले मेरे खाने में कुछ मुझे मिला के दे रहे हैं। रेफरेंस का ये होता है कि अगर 2 अनजान लोग बात कर रहे हैं तो ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, कोई कहीं भी कोई बात हो रही है वो सिर्फ मेरे बारे में हो रही है। अदर थॉट और इसमें हो सकता है कि इरेलेवेंट स्पीच हो, इम्पेयर्ड एब्स्ट्रैक्शन हो और एम्बिवेलेंस हो पेशेंट में। डिसऑर्डर ऑफ एक्ट: इमोशनल ब्लंटिंग होगी, इमोशनल शैलोनेस होगी, एनेडोनिया, कोई रिएक्शन नहीं देगा, इनएप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स होगा, सेल्फ स्माइलिंग होगी पेशेंट में,
इसमें स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट हो सकती हैं, इंक्रीज और डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, या तो पेशेंट बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगा या बिल्कुल ही मूवमेंट करनी बंद कर देगा। पुअर ग्रूमिंग, अपना खुद से नहाना धोना नहीं कर पाएगा, कपड़े नहीं डाल पाएगा, खाना नहीं खा पाएगा। अदर फीचर होता है कि ईगो, लॉस ऑफ इंसाइट होती है, पेशेंट के मुताबिक उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पेशेंट यही सोचेगा कि मैं तो ठीक हूँ, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुअर जजमेंट होती है और सुसाइडल टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया था कि अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे कॉमन है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, इट्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, फीलिंग्स ऑफ पैसिव और एक्टिव कंट्रोल, फीलिंग्स ऑफ इंट्रूजन और ऑफन बाय मेगालोमैनिक टेंडेंसीज। इसमें जैसे पेशेंट आके ये परसिक्यूशन में ये भी बोल सकता है कि किसी ने मेरी बॉडी के अंदर कैमरा फिट कर दिया है, मैं जो भी करता हूँ या करती हूँ वो मुझे देख सकता है। हेबिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, इनके आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए, क्योंकि आपके लेवल पे इतनी डिटेल में नहीं पूछेंगे वो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। कैटाटोनिक होता है, फिर अनडिफरेंशिएटेड होता है। अनडिफरेंशिएटेड तब बोलते हैं जब टिपिकली वो दो सब ग्रुप जैसे कैटाटोनिक और हेबिफ्रेनिक और पैरानॉइड के सिम्टम्स मिक्स में हो, और क्लियरली अनडिफरेंशिएट हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे सिम्टम्स के अंदर। पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन काफ़ी कॉमन है, जब पेशेंट रेजिडुअल फेज में आता है, जब उसकी सिम्टम्स इनसाइट वापस आनी शुरू होती है, तब पेशेंट को मोस्ट कॉमनली डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिल्यूजन में जेलस टाइप होता है, जिसमें जेलस टाइप में मोस्टली जैसे हस्बैंड है तो उसके अपनी वाइफ पे शक होगा कि इसका कहीं अफेयर चल रहा है। परसिक्यूटरी आपको बता चुका है कि विच आर द मोस्ट कॉमन टाइप। इंडिविजुअल्स बिलीव दे आर बीइंग परसिक्यूटेड बाय द सोसाइटी, everyone is conspiring against them, they are to be they are being spied on, followed, poisoned or drugged. Delusional disorder, ये डिफरेंट होता है स्किज़ोफ्रेनिया से, पर ब्रॉड कैटेगरी साइकोटिक डिसऑर्डर्स में आता है। इंडिविजुअल्स विद सोमैटिक डिल्यूजन्स बिलीव दैट दे हैव सम फिजिकल डिफेक्ट, डिसऑर्डर और डिजीज। जैसे कि कोई पेशेंट को शक हो जाएगा कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, वो मल्टीपल हार्ट डॉक्टर्स को दिखाएगा, मल्टीपल टेस्ट करवाएगा, एंजियोग्राफी, इको मल्टीपल टाइम्स कराएगा। इवन डिल्यूजन तब बोलते हैं जब उसको पूरी एविडेंस दिखा के कोई दिक्कत नहीं है, और फिर भी ये मान रहे हैं कि मेरे अंदर तो हार्ट की प्रॉब्लम है, आप मुझे ढंग से देख नहीं रहे। ठीक है, उसे मोस्ट कॉमन होती है इंसेक्ट्स की डिल्यूजन होती है इसमें। हाँ, क्या उसके अंदर यह इंटरनल पैरासाइट है, डिसफंक्शनल बॉडी पार्ट्स हैं, मिसहैपन और अगली बॉडी पार्ट्स हैं। मोस्टली इसमें सोमैटिक डिल्यूजन्स होती हैं, सोमैटिक जो बॉडीली सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। Acute or transient psychotic disorder. The criteria should be that at the acute phase beginning in less than 2 weeks, presence of typical symptoms, quickly changing, presence of typical schizophrenic symptoms होते हैं, पर schizophrenia का जो टाइम पीरियड है मिनिमम 1 month continuous symptoms एंड 6 months वो नहीं होता इसमें। if you within 14 days स्टार्ट हो सकता है और within 3 days भी हो सकती है ऑनसेट इसकी, और within 5 to 6 months ये completely self remitting हो सकता है, बिना किसी मेडिकेशन भी पेशेंट ठीक हो सकता है। Complete recovery usually occurs within a few months, often within a few weeks or even days. The disorder may or not be associated with acute stress, defined as usually stressful events preceding the onset by 1 to 2 weeks. Induced delusional disorder. A delusional disorder shared by 2 or more people with close emotional links. Only one of the person suffers from the genuine disorder, but the other person usually feels that he is also suffering from the similar delusions, but they usually disappear when the both people are separated from each other. The psychotic disorder of the dominant member of this diet is mainly, but not necessarily, of the schizophrenic type. The original delusions of the dominant member and his partner are usually chronic and either persecutory or megalomaniac. Like we had 2 sisters, one was a patient of schizophrenia, but since they used to stay together, the second sister also started developing similar delusions as her sister. Schizoaffective disorder. It's when the patient has symptoms of both the bipolar disorder and the schizophrenia, we classify them in the schizoaffective disorder. Episodic disorder in which both affective and the schizophrenic symptoms are prominent during the same episode illness, at least during a few days, but which does not justify a diagnosis of either schizophrenia, depressive or manic episodes. Patient suffers from periodic schizoaffective disorders, especially with manic symptoms, have usual good prognosis with full remission without any remaining defects. This is a classification of schizoaffective disorder. It can be manic type, depressive type, mixed type, other schizophrenic or otherwise unspecified. Basically there are no laboratory tests for
making diagnosis of schizophrenia or any other psychiatric disorder. Based on psychiatric history, mental status evaluation, we make a diagnosis of the patient. DSM-5 criteria for schizophrenia. Two or more of the following, each present for significant portion of time during a 1 month period. At least one of them must be there, from 1 to 3. इनमें से 2 होने चाहिए, पर 1 to 3 में से एक कंपल्सरी है होना. That is hallucination, delusion and disorganized speech. For a significant portion of time since the onset of disturbance, level of functioning in one or more major areas such as work, interpersonal relations or self-care is markedly below the level achieved prior to the onset. Or when the onset is in childhood or adolescence, there is failure to achieve expected level of interpersonal, academic or occupational functioning. Continuous signs of disturbance must persist for at least 6 months. Schizoaffective and depressive or bipolar disorder with psychotic features have been ruled out either because no major depressive illness or many episodes have occurred concurrently with the active phase symptoms. If mood episodes have occurred during the active phase symptoms, they have been present for minority of the total duration of the active and residual period of illness. Treatment. We can use pharmacotherapy or we can use psychotherapy. First, pharmacotherapy. I'll name just few drugs that will be commonly used in treatment of schizophrenia. They can be classical neuroleptics, that is conventional antipsychotics like chlorpromazine, haloperidol we use still, flupentixol, fluphenazine, and trifluoperazine. These are commonly used. Then comes the atypical antipsychotics which are more commonly used: amisulpride, clozapine, olanzapine, quetiapine, risperidone, sertinol. For treating delusions, if their delusions are more prominent in a patient, the best preferred drugs that we use are clozapine and risperidone, with clozapine being more effective. Other antipsychotics also work, but they are the best in the treatment. We can give ECT therapy, especially for the patient in catatonic stage, uncontrolled catatonic excitement, or patient who usually for catatonic patient usually 8 to 12 ECT sessions are needed. Then comes the psychotherapies. इंडिविजुअल थेरेपी, आपको इनके नाम बता देता हूँ, ठीक है. इंडिविजुअल थेरेपी, they were done by Ho, Black and Anderson. Although intensive psychodynamic and insight-oriented psychotherapy is generally not recommended because patients of schizophrenia do not have insight in the initial part of their treatment. The form of individual psychotherapy that psychiatrists employ when providing pharmacological treatment typically involves synthesis of various psychotherapeutic strategies and interventions. These include problem solving, reality testing, psychoeducation, sportive and cognitive behavior techniques anchored on the empathetic therapeutic alliance with the patient. The goals of such individual psychotherapy are to improve the medication compliance. The primary focus of all the cases must reflect efforts to decrease anxiety and increase the trust. Establishing a relationship is often particularly difficult because the individual with schizophrenia is desperately lonely, yet defends against closeness and trust. A schizophrenic patient will never easily trust with you. It takes nearly 2 to 3 interviews at least to just get the patient talking. Group therapy. Group therapy is when the individual with schizophrenia has been shown effective